Hello everyone, we are discussing the third chapter of biology of 9th class, that is diversity in living organisms. We are discussing types of vertebrates, in which we have already discussed the general characters of the class: Cyclostomata, Pisces, amphibians, reptilians and apes. And now in this session we will talk about the general characters of the mammals. So let's get started. We are discussing the diversity in living organism. In which we are talking about the types of vertebrates. So almost 6 types, there are 6 classes of vertebrates, and now today we will discuss the 6th and last class of vertebrate, that is mammals. So the general characters of class mammals. This is the most evolved and advanced class, that is class Mammalia. So the first feature of this class is it is the most advanced and evolved class among vertebrates. And their examples are human being. Human being is a mammal. Other examples are cat, dog, cow, dolphin, blue whale, lion, tiger, and so on are. So the mammal is the most advanced and evolved class among all vertebrates. So they are mostly they are terrestrial. Few are aquatic, and few can fly. So mostly they are terrestrial, few are aquatic, and few can fly. For example, bat. Bat is a mammal that can fly. Remember that. Bat is an exception. Bat is a mammal that can fly. So now let us talk about the unique features of mammals. First of all, mammals have mammary glands.
and this gland produces milk that nourishes the baby or young ones. So the first unique feature of mammal is that they have mammary gland that produces glands that produces milk to nourish their young ones. They have mammary glands that produces milk to nourish their young ones. So this is the first unique feature of mammals, that having mammary glands. The other feature includes their exoskeleton contains hair. Their exoskeleton contains hair. That means exoskeleton, that means outer body part contains or covered by hair. Exoskeleton is made of hairs. The next feature includes they have ear pinna. That is the outer part of ear. Outer part of ear is called ear pinna. This is the ear pinna. So mammals have ear pinna. This is also the unique part. And next is their skin. Their skin contains sweat and oil glands. So their skin, oil glands and sweat glands are present in their skin. They have different types of teeth arranged in jaw. They have different types of teeth arranged in jaw. So another unique feature is that they have two pair of limbs. They also have two pair of limbs that is adapted for. The limbs are adapted for. They have two pair of limbs that are adapted for walking, running, climbing, swimming, burrowing, flying, and etc. So here the two pair of limbs are present, and the purpose of these two pair of limbs is for walking. They use for walking, running, climbing, swimming, burrowing, and flying. So these are the main unique features that all mammals have. Other features includes
respiration. Mammals have well-developed lungs, so they respire by lungs. Mammals have well-developed lungs, so they respire by lungs. Next is, if we talk about the circulation, if we talk about the circulation, mammals' heart is four-chambered. Mammal's heart is four-chambered. Heart is four-chambered. And mammals are viviparous. Viviparous means are those organisms. Viviparous are those organisms that produce their young ones or baby. So they are viviparous. Those organisms that produces young ones, or baby. The next feature is they are warm-blooded animal. Warm-blooded animal. Warm-blooded are also known as homoeothermous. Homoeothermous. Now, what is warm-blooded animal? We already have discussed this in case of class apes. Apes, that includes birds. Birds are also warm-blooded animals. Their body temperature and mammals' body temperature both remains constant throughout the year in all types of weather. So, warm-blooded animal. So, their body temperature is constant in all type of weather. Now let us have a quick recap in Hindi. आज हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मैमल्स का देखा है, जो कि लास्ट क्लास है वर्टिब्रेट्स का, और ये सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड और एडवांस्ड क्लास है वर्टिब्रेट्स का मैमल्स, जिसमें कि एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बींग्स, आदमी, हम सब इसमें आते हैं. कैट, डॉग, काउ, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, लायन, टाइगर, सो ऑन आर द examples of mammals. And mostly they are terrestrial, that means they are found on land. Few are aquatic, some of them are found in water, and few can fly. For example, bat is a mammal that can fly. The other unique features of mammals are बैट एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ भी सकता है. अदर यूनिक फीचर अगर हम बात करें मैमल्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, और ये मैमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं मिल्क टू नूरिश देयर यंग वंस. अपने यंग वंस की नूरिशमेंट के लिए ग्लैंड्स जो हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. द नेक्स्ट फीचर इज़ उनका जो बॉडी का आउटर पार्ट होता है वो हेयर से कवर्ड रहता है. थर्ड फीचर है कि उनके पास ईयर पिन्ना यानी आउटर ईयर
आउटर पार्ट ऑफ ईयर होता है, इसे ईयर पिन्ना कहते हैं। नेक्स्ट फीचर है देयर स्किन कंटेन्स स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। मैमल्स के जो स्किन है उसमें ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अरेंज्ड इन जॉ। डिफरेंट टाइप के दांत जबड़ों में प्रेजेंट रहते हैं। और टू पेयर ऑफ लिम्स जो हैं, टू पेयर ऑफ लिम्स एम्फीबिया रेप्टिलिया में भी पाया जाता है। एप्स तो बर्ड है जो उड़ते हैं, उनमें भी टू पेयर ऑफ लिम्स था, जिनमें फोर लिम जो है मॉडिफाई हो गया था विंग्स में। और फिर आ गए मैमल्स। मैमल्स में जो टू पेयर ऑफ लिम्स हैं वो वॉकिंग के काम आते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बरोइंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन मैमल्स बाय लंग्स करते हैं, वेल डेवलप्ड लंग्स होता है। सर्कुलेशन की बात कर लें तो हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। विविपेरस होते हैं। विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यंग वंस और बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, एग नहीं देते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। वार्म ब्लडेड और होमोयोथर्मस एनिमल है। देयर बॉडी टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ वेदर। हर तरह के वेदर में एक ही टेम्परेचर रहेगा, उनके बॉडी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो हमने देखा कि एप्स में और मैमल्स में 2 कॉमन फीचर्स थे। एप्स और मैमल्स दोनों ही वार्म ब्लडेड एनिमल भी हैं और साथ ही साथ इनके हार्ट जो हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। So this is all about the general characters of the mammals, and in the next episode we will talk about the binomial nomenclature. So see you in the next episode. Goodbye.